As Mr. Singhvi told, sir, we are living in an area where there are 100 huts, all thatched roofs. If the last house is burning, the person sleeping in the first house will not sleep. He will go, run and put out the fire with the fire brigade. और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज मैं जो बोल रहा हूं प्रावधान है. उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री. पहला, ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है. दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है. और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है. Not in any other manner. In the democratic process, one day they will be out of power. And every day they will be lamenting and regretting for all those laws they have enacted. It is not far behind, sir. 2024, the India Alliance will win. We will be there. And sir, we will restore Delhi its autonomy. Hello and welcome. You're watching HW News English. I am Saurabh George. The National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 was discussed in Parliament yesterday, 7th August 2023. The bill has been passed in the Lok Sabha by a voice vote on 3rd August. The Union Minister Amit Shah presented the bill in the Rajya Sabha. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए. Starting with Manu Singhvi, he said, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party, the centre and the NCT or different parties, not one of them have tried to overrule two constitutional bench judgments. तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है. ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों. कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के. मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा. ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा. और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज मैं जो बोल रहा हूं प्रावधान है. उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री. ये सब गृह मंत्रालय में आएगा. चौथा दोस्तों, चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में. उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार. उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से. Second is tiruchi. He said it is an intolerance to say very shortly if an opposition party is ruling, they will be disturbed by the governors. If it is a union territory, the lieutenant governor will take all the power and will not allow the state government to function. Number 1, this bill attempts to establish a National Capital Civil Services Authority. As everyone said, it will consist of 3 members under the chairmanship of the Chief Minister and 2 officers, Home Secretary and Chief Secretary. Who are they? Appointed by the Union government. Obviously, one can understand what will be the outcome. The quorum is 2 and the majority will be the decision. Sir, I have moved an amendment which even it may be passed. I think with hope. If at all it is passed, even it won't be of use, sir. Because
Even if the authority with a majority gives a suggestion to the lieutenant governor, he can reject it. So ultimately it goes there. The authority becomes redundant and the chief ministership becomes lesser than a rubber stamp. We are very sorry to say these words. A chief minister elected by the government has to fulfill the obligations by the mandate is been given to him. But whereas he is not able to have control. So Delhi has been the nucleus of power from Mughals to British. Can anyone say any ruler has ruled without control on their officers, whether he or she? But now this bill paves the way. Sir, where we are heading towards? Sir, kindly tell us. We are not just accusing the government or pointing fingers, what you are doing is wrong, but kindly explain to us why all these things happen. A government which has been elected by the people, they have to cater to the needs of the people. They only know the local people's aspirations. That's why we are pleading for state autonomy. When the voice for decentralization is going up and up, this government is traveling on the opposite direction. Powers are centralized in the union government again and again. What will happen? It will get broken. Sir, India, which is known for federalism, sir, everything is under threat now. Secularism is under threat now. Especially, sir, we are very much concerned that this bill again strikes at the very root of federalism. As Mr. Singhvi told, sir, we are living in an area where there are 100 huts, all thatched roofs. If the last house is burning, the person sleeping in the first house will not sleep. He will go, run and put out the fire with the fire brigade. Yes, it is not only to help him, sir, but to safeguard his own self. If it is not put out, that fire will slowly come and at last it will affect them. So it has to be thought over. Not in any other manner. In the democratic process, one day they will be out of power. And every day they will be lamenting and regretting for all those laws they have enacted. It is not far behind, sir. 2024, the India Alliance will win. We will be there. And sir, we will restore Delhi its autonomy. Third is Sukhendu Shekhar. He said, what is the urgency? There is no whisper about the urgency in the bill or the statement which has been received just now after the introduction of the bill. The question is whether the Legislative Assembly of Delhi has powers over all matters in list 2 except the matters in entries 1, 2 and 18, which is public order, police and land. In apparent defiance of the 11th May judgment, this bill seeks to amend the JNCT Act for abridgment of the powers conferred upon the JNCT legislation by the Constitution. Because the entry number 41 is sought to be taken away, is sought to be inserted through this bill. So 3 will be 4. Rightly pointed out by our senior counsel, Mr. Abhishek Manu Singhvi. Now, sir, when a constitutional bench comprising 5 judges of Supreme Court declares or interprets Article 239 AA3A of the Constitution, the same is binding upon all courts and authorities in India in terms of Article 141 and 144 respectively. Neither Article 239AA3A nor Articles 141 and 144 can be negated without a constitutional amendment. Fourth is Raghav Chadha. Raghav Chadha said to the Union Minister Amit Shah, don't become a Nehru, become like an Advani, become like an Atal Bihari Vajpayee and give Delhi an independent status. पहला, ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला राजनीतिक धोखा, ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया।
1977 में जब थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी ऑफ दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी नापर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर 1998, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यह बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। Fifth is Vijay Sai Reddy. He said Delhi government shall be subjective to a limited to the executive power conferred upon the central government by the constitution or law made by the parliament. Sir, the crux of the entire bill has to be understood in the light of the provisions of Article 239 AA, as my colleague has pointed out, sir. Sir, 239 AA clause 3 has got 3 subclauses. Subclause A, subclause B, subclause C. Sir, subclause A states Delhi legislature has got the power to make the laws in so far as the issues are concerned except public order, law and police. Sir, subclause B states that Parliament shall have the power to make the laws with respect to any matter of our Delhi. Any matter. Sir, the subclause C states that in the event of clash between the Delhi government and the Parliament, the law made by the Parliament shall prevail and the law made by the Delhi government will become null and void. Sir. This is the Constitution clearly provides Parliament an upper hand when it comes to the making laws for Delhi. Therefore, the argument put forth by AAP and also the learned senior advocate Manu Singhvi ji observations are not will not stand before the law. Continuing to above leaders, Sudhanshu Trivedi of BJP said this country has seen a super PM without any constitutional position. जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मगर महोदय इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। That's all on the yesterday Parliament. Stay tuned with SW News English. Thank you for joining us.